Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Notes, Changing the Way of Learning। स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सर्वेइंग का पार्ट 3 लेके। यहाँ पे मैं सर्वेइंग का कुछ थ्योरी का क्लास कराऊंगा जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट का भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। ये एंगल 90 डिग्री, इसको राइट एंगल बोलता। The following instrument may be used for setting out right angle at a given point on the line and for finding the foot of perpendicular from the given point to a line. Cross stop. There are three forms of cross stop. Cross stop का थ्री फॉर्म। ओपन क्रॉस स्टॉप, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप and adjustable cross stop. Since the open cross stop is light and strong, therefore it is more commonly used for setting out an offset at a right angle. The French cross stop is used for setting out an offset at 45 degree angle. And the adjustable cross stop is used for setting out an offset at any angle. देखिए, ये थ्री काइंड्स का, तीन तरीका का। ओपन क्रॉस स्टॉप, ओपन क्रॉस स्टॉप, ओपन क्रॉस स्टॉप। ओपन क्रॉस स्टॉप क्या काम पे आता? 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने का हेल्प करेगा। 90 डिग्री ऐसा। नंबर 2, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप 45 डिग्री। ऐसा तरीका का 45 डिग्री एंगल। नंबर 3, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप ये एनी एंगल, एट्टी डिग्री, 70 डिग्री, जो भी एंगल ड्रॉ करने के लिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप यूज करा जाता। ऑप्टिकल स्क्वायर।
It is more accurate than the cross stop. क्रॉस स्टॉप से भी बहुत इम्पोर्टेंट, more accurate, optical square. It is more accurate than the cross stop and used for setting out accurately the long offset. It is a small compact hand instrument based upon the principle of reflection. The other instrument belonging to a class of reflecting instrument are line ranger, box sextant, and prismatic compass. अभी देखिए क्या भार्सिंग, क्या भार्स करना पड़ता कोई भी लैंड को, कोई भी फ्रेमवर्क को. A Tabhart surveying is one in which the framework consists of a series of connected lines whose lengths are measured with a chain or tape, and the directions are determined with an angular instrument. With an angular instrument. The instrument commonly used for the measurement of angles are a compass and a theodolite. देखिए एंगल मेजरमेंट करने का, कोई भी एंगल मेजरमेंट करने का कॉमन इंस्ट्रूमेंट कंपास, थियोडोलाइट, कंपास, थियोडोलाइट. कोई भी एंगल मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कंपास, थियोडोलाइट. समटाइम्स ए बॉक्स सेक्सटेंट इज also used. बॉक्स सेक्सटेंट भी यूज होता है एंगल मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन मेन है कॉम्पास एंड थियोडोलाइट. कॉम्पास, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट एंगल मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट. अभी देखिए डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग. डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग्स very important. The following two systems are commonly used to express the bearing: whole circle system and quadrantal system. Whole circle bearing and quadrantal bearing. B. In the whole circle system, the bearing of a line is always measured clockwise. एक bearing 360 डिग्री का. In the whole circle system, the bearing of a line is always measured clockwise. इधर से इधर क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसा घूमता ये बियरिंग इस तरफ से मेजरमेंट होता. हम
north point of the reference meridian towards the line of round of the circle. नॉर्थ, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से स्टार्टिंग होता. The angle thus measured is called whole circle bearing, WCB, whole circle bearing. It may have any value between 0 to 360 degree. ये जो अभी बात किया ये नॉर्थ से स्टार्ट होता, जब नॉर्थ से फिर नॉर्थ तक आऊंगा उस टाइम 360 डिग्री होगा. ऐसा करके ये घूमता. The bearing observed with a prismatic compass or theodolite are the whole circle bearing. यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, प्रिज्मेटिक कंपास और थियोडोलाइट होल सर्कल बियरिंग के लिए यूज होता. होल सर्कल बियरिंग WCB. क्या प्रिज्मेटिक कंपास, and theodolite. इन क्वाड्रेंटल सिस्टम में क्या होता देखो, द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट और द साउथ पॉइंट, व्हिच एवर इज नियरर द लाइन. ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या बोल रहे हैं, ये एक होल सर्कल बियरिंग, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो यहाँ से इधर भी घूम सकता, इधर से इधर भी घूम सकता, यहाँ से इधर भी घूम सकता, यहाँ से इधर भी घूम सकता. क्या हिसाब से घूमता देखो, जहाँ पे पॉइंट नियरेस्ट होगा, इसको मैं 4 पार्ट किया. ये 90 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, सॉरी गलत लिखा था, 360 डिग्री, 360 डिग्री नॉर्थ पोल वाला. नॉर्थ पोल का इस तरफ. तो देखिए अगर नॉर्थ पोल का ऊपर आएगा तो 0 डिग्री भी होगा. तो देखो देखो क्या पकड़ो, मेरे को बोला एक 150 डिग्री, 150 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, 150 डिग्री. तो ये नॉर्थ से नियरेस्ट है ना साउथ से नियरेस्ट है, ये साउथ से नियरेस्ट है. तो इधर से इधर तक जाएगा. अगर मेरे को बोलता 210 डिग्री तो यहाँ आता 210 डिग्री, तो उस टाइम साउथ से इधर घूमता. मेरे को बोलता 45 डिग्री, 45 डिग्री बोलता तो साउथ से नहीं जाएगा, ये नॉर्थ से आएगा, नॉर्थ से नियरेस्ट है, नॉर्थ से नियरेस्ट है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो,
In this system, the bearing is reclined from 0 to 90 degree. 0 থেকে 90 ডিগ্রি ঘুমেগা in each quadrant. Bearing observed with surveyor's compass. ये जो QB क्वाड्रेंटल बेयरिंग ये किस में मेजर करा जाता? सर्वेयर्स कॉम्पास. सर्वेयर कॉम्पास. तो होल सर्किल बेयरिंग प्रिज्मेटिक कॉम्पास और थियोडोलाइट. क्वाड्रेंटल बेयरिंग सर्वेयर्स कॉम्पास. अभी देखो रेडियस बेयरिंग. When the whole circle bearing of a line exceed 90 डिग्री, जब 90 डिग्री से ज्यादा होता, it may be reduced to the corresponding angle less than 90 degree which has the same numerical value of the trigonometrical function. This angle is known as reduced bearing. In order to obtain the reduced bearing from the whole circle bearing of a line, तो देखिए ये टेबल दिया हुआ 0 to 90 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग. रूल फॉर रिड्यूस बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग नॉर्थ ईस्ट. देखो 0 থেকে 90 ডিগ্রি মানে এর মধ্যে থাকবে এখানে. এটা হবে কি নর্থ ইস্ট. এটা তো নর্থ, এ নর্থে, এ ইস্ট, এ সাউথ, এ ওয়েস্ট. 0 से 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंटल. 90 टू 180 डिग्री यहाँ पे साउथ ईस्ट. ऐसा करके हो रहे हैं. अभी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता, बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से आता. बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग. Every line has two bearing. On observed at each and one of the end of the line, the bearing of a line in direction of the process of survey is called for or forward bearing, while its bearing in the opposite direction is known as the back or reverse bearing. It may be noted that the fore and the back of the line of a line differ exactly by 180 डिग्री, 180 डिग्री. तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है. बैक बियरिंग पीबी मतलब बैक बियरिंग इक्वल टू एफ बी मतलब फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री. तो देखिए फोर बियरिंग दिया हुआ, फोर बियरिंग 40 डिग्री, फोर बियरिंग 40 डिग्री, बैक बियरिंग कितना है ये आपको पूछा. तो आप क्या करेगा, बैक बियरिंग इक्वल टू 40 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री. यहाँ पे प्लस यूज करेगा ना माइनस यूज करेगा? यहाँ पे प्लस यूज करेगा. क्या प्लस?
यहाँ पे प्लस साइन यूज करेगा। यहाँ पे प्लस साइन यूज करेगा। अगर तो इसका आंसर आएगा 220 डिग्री। फोर बियरिंग 200 डिग्री, बैक बियरिंग कितना है? तो बैक बियरिंग इक्वल टू 200 डिग्री माइनस 180 डिग्री, आएगा कितना? 20 डिग्री। अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम होगा तो प्लस साइन यूज होगा। फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम होगा तो प्लस साइन 180, फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तब माइनस साइन यूज होगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता। अभी देखिए थियोडोलाइट कैवर्सिंग, थियोडोलाइट कैवर्सिंग। The theodolite is the most intricate and accurate instrument used for measuring horizontal and vertical angles. Theodolite हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स मेजरमेंट करने के लिए यूज होता। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए थियोडोलाइट यूज होता। It is classified into two classes: tangent theodolite, non-tangent theodolite. Tangent theodolite, non-tangent theodolite. देखिए, a theodolite is called tangent theodolite when a telescope can be transited, revolved through revolved through a complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane. A theodolite is called a tangent theodolite when its telescope can be transited through a complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane. ये घूमता, इसका एक्सिस को सेंटरिंग करके ये घूमता वर्टिकल प्लेन में। In a non-transit theodolite, the telescope cannot transit.
अभी देखिए थियोडोलाइट का सेंटरिंग, ट्रांजिस्टिंग, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ लेवल और बबल ट्यूब सर्वेइंग टेलीस्कोप, ये आप लोग देख लीजिए। अभी देखो measurements of horizontal angles, direct angles, reflection angles and vertical angles. Ordinary method. The following three methods are used to measure horizontal angle. हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने का जो सब तरीका है, ऑर्डिनरी मेथड, रिपीटिशन मेथड, रेइटरेशन मेथड, ये सब आप लोग देख सकता। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, द डायरेक्ट एंगल मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 360 डिग्री। जीरो टू 360 डिग्री। Ever survey with a theodolite. In theodolite traversing, the field work consists of reconnaissance sections of stations, marking and locating stations, running of survey lines, locating the details, and booking of field notes is almost the same as for compass traversing. The traverse may be opened or closed, like the compass or plane table survey. A theodolite is used for determining the relative directions of the lines of traverse, and a steel tape is generally used for linear measurements. The methods by which the relative directions of the line of a traverse may be determined as follows. By the measurements of angles between successive lines, by the direct observation of bearing of the survey line. The first method is generally used for long traverses, where high precision is required, while the second method is used for short traverse, where high precision is not required, and for टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपो करने के लिए वहाँ पे एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट जरूरत नहीं, इसलिए सेकेंड मेथड बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग ऑफ द सर्वे लाइन जरूरत पड़ती, लेकिन एक्यूरेट काम के लिए बाय द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन सक्सेसिव लाइन। The computation, traverse computation. In survey work, after the field work is over, the position of different points are plotted on a plan with reference to two lines which are respectively parallel and perpendicular to the meridian. If the length and bearing of a line are known, its projections of the line parallel to the meridian
and on the line perpendicular to it may be obtained. अगर ये फील्ड सर्वे करने के बाद कुछ डाटा में ले आया, जो अब मैं ड्राइंग बनाने के लिए पुट करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट लेके आया, तो क्या होगा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऐड किया, तो यहाँ पे ऐसा लाइन बन जाएगा। ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये सब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन्स। ऐसा करके एरिया कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते। तो गाइज, इट इज मच फॉर टुडे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।